विल पावर इज ओवररेटेड मेरे को लगता है, सच्ची बताऊं। मेरे पास एक पेशेंट आया था एंड देन ही गोज लाइक कि सर मैंने तो इतना वेट लॉस कर लिया बट देन नाउ आई हैव गेन्ड द होल थिंग बैक, आई रियली डोंट हैव विल पावर, आई एम अ लूजर। वंस यू स्टार्ट डाइटिंग ना, आपकी बॉडी की बायोलॉजी को आप उसके नेचुरल प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हो। यू नेवर क्रेव एनीथिंग हेल्दी आफ्टर सम रफली अराउंड 10-11 है कि बिकॉज उस टाइम ऑफ द डे पे आप सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, इट इज साइकोलॉजिकली आपके बॉडी का एक मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि वो रात को इट वांट्स समथिंग व्हिच इज इजी टू एब्जॉर्ब, लाइक यू नो Yeah. इजी कैलोरीज। पता है कि हम लोग वी हैव एसोसिएटेड जंक फूड विद कंफर्ट फूड एंड हैप्पीनेस। These cases, bariatric surgery is working wonders because you are biologically changing your hormones. सर्जरी इज नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ इट, बट सर्जरी ऑब्वियसली डज हेल्प अ लॉट। 35-40 के आसपास वी आर ऑल हसलिंग। हमारा वो पर्पस ही रहता है कि चलो अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इन दैट एज ग्रुप वी टेंड टू इग्नोर आवर हेल्थ। Which is the right supplement to take? How would they know? Because nobody is there to teach them. So, in this episode, are you ready to ruin a few self-help books? हाँ, मेरे को तो लगता है कि शायद दैट हैज बिकम माय स्पेशलिटी नाउ, है ना। Yeah, because I've seen your reels about willpower being so overrated. विल पावर इज ओवररेटेड मेरे को लगता है, सच्ची बताऊं। पीपल अगेन टेंड टू ब्लेम देयर ओबेसिटी और देयर अनहेल्दी हैबिट्स ऑन विल पावर, कि इसका विल पावर नहीं है ना इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाता या नहीं कर पाती है। विल पावर होता ना, थोड़ा कंट्रोल कर लो, ये कर लो। आई थिंक इट इज ओवररेटेड। इट इज जस्ट नॉट अबाउट विल पावर, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स इनटू इट। हाँ, क्योंकि आज मेरे पास एक पेशेंट आया था एंड देन ही गोज लाइक कि सर मैंने तो इतना वेट लॉस कर लिया बट देन नाउ आई हैव गेन्ड द होल थिंग बैक, आई रियली डोंट हैव विल पावर, आई एम अ लूजर। ऐसा नहीं है, देख। वंस यू स्टार्ट डाइटिंग ना, आपकी बॉडी की बायोलॉजी को आप उसके नेचुरल प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हो। बिल्कुल। देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट गो इनटू इट। आपका हंगर हार्मोन्स जो रहते हैं वो स्पाइक अप होते हैं। आपके सेटाइटी हार्मोन्स जो रहते हैं जिससे आपको भूख कम लगती है वो बढ़ने लगते हैं। जब तक के शाम होती है, इवनिंग होती है, आप स्टार्टिंग के 2-4-5 दिन, आई मीन आई ऑल्सो, मैं भी फास्ट करता हूँ। श्रावण महीना हो गया, ये महीना हो गया, व्हेन यू फास्टिंग फॉर कंटिन्यूसली फॉर 6-7-8 डेज, 9 डेज, पहले पहले तो कुछ नहीं लगता बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट इफेक्ट कि चलो ठीक है, मोटिवेटेड हो, सब कुछ हो। पर एक बार जब वो मोटिवेशन फैक्टर थोड़ा निकल जाता है ना, इनिशियल वाला, उसके बाद आपकी बायोलॉजी आपको लगती है। आप इंस्टाग्राम पे खाने की रील्स ही दिखती है आपको बार बार, खाना दिखने के बाद आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली रात को। हाँ, रात को। एंड समहाउ आप, नॉट जस्ट यू मी, एवरीवन, रात को कभी भी हम लोग हेल्दी खाने के लिए क्रेव नहीं करते। तेरे को कब लगा कि रात को मेरे को 10-11 बजे के मेरे को सैलेड खाना है, क्या खाने की इच्छा होती है? सिर्फ बर्गर्स। बट यही होता है। आई मीन वो एक, मैं कहीं तो भी एपिसोड देख रहा था, उसमें बोलता है ना, नथिंग गुड हैपेंस आफ्टर 11 के आसपास या आफ्टर 1 PM के 1 AM के आसपास। बट नथिंग, यू नेवर क्रेव एनीथिंग हेल्दी आफ्टर सम रफली अराउंड 10-11, बिकॉज क्या होता है, हमारी, आई थिंक, बायोलॉजिकल क्लॉक या हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा रहता है। आई मीन यू कैन नॉट ब्लेम इट एंटायरली ऑन योर मेटाबॉलिज्म या बॉडी क्लॉक ऐसा। बट 10-11 बजे के आसपास ना, उसके बाद आपको कभी भी जो क्रेविंग होती है, दैट इज नॉट एवरी टाइम हेल्दी। तो इफ अगर अपन लोग सिर्फ अपना जो स्केड्यूल बोलते हैं ना उसको भी अगर रीसेट करें ना, somehow that also helps to some people. But again, you cannot blame it everything on willpower. मुझे लगता है कि बिकॉज उस टाइम ऑफ द डे पे आप सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, इट इज साइकोलॉजिकली आपके बॉडी का एक मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि वो रात को इट वांट्स समथिंग व्हिच इज इजी टू एब्जॉर्ब, लाइक यू नो Yeah, इजी कैलोरीज। तो possible. साइकोलॉजिकली एंड बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन द बॉडी इज इवॉल्व्ड लाइक दैट कि जहां से भी उसको इजी कैलोरीज मिले उसकी क्रेविंग वो हमारी इंक्रीज कर देती है। एक और चीज हो सकता है, मेरे को लगता है कि हम लोग वी हैव एसोसिएटेड जंक फूड विद कंफर्ट फूड एंड हैप्पीनेस। अब तो एग्जैक्टली। इमेजिन कर, बचपन में जब भी अपना सेलिब्रेशन कुछ भी कर रहे हैं, बर्थडे हो, कुछ हो, वो हो, तूने कब घर पे एकदम रोटी सब्जी दाल चावल खाए? जब भी सेलिब्रेशन का मोमेंट आता है तो वो हम क्या खाते थे? समोसा, बर्गर, जंक ये फूड वो। बेसिकली, एग्जैक्टली। cakes, cold drinks, also एग्जैक्टली। liquid calories, राइट। all kinds of junk food. Right. So we have associated all this junk food with happiness somehow at the back of the mind. And we've Exactly. trained our body for almost 20, 25, 30 years now Hmm. that.
और अभी आप उसको बोलोगे कि नहीं हैप्पीनेस इज इक्वल टू हेल्दी फूड, तो वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता है। एंड डाइट कल्चर जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम्म, वो हमें सिर्फ यही सिखाता है कि आपका विल पावर अच्छा रखिए, तो आप अच्छे से डाइट कर पाओगे। बट उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नोबडी टॉक्स अबाउट इज़ दैट इफ your body is craving something, that is because it is psychologically associating it with happiness. yeah, And you have spent the whole day, obviously nowadays the stress is very high. yeah. You spend the whole day with a lot of stress, and you reach home, there are obviously family issues at home. A lot of people face family issues. All of this, by the end of it, you give up. You're like, this is something which I need. This is a time when I need that comfort food. And as you said, we have associated that with junk. And हम्म। that is when people normally tend to eat a lot. ऐसा नहीं लग रहा अपन लोग दो अंकल ज्ञान दे रहे हैं तो बैठे हाँ, बिल्कुल। बैठे बट नहीं, but we are two bariatric surgeons talking yeah, about it. yeah. So I think it is more credible than anything else. But day in day out we see these kind of people only, and in fact हम लोग भी we are not are the वो बोलते हैं ना usual eat clean stay lean type का, we also हम्म, like to enjoy life यार, हम लोग भी जाते हैं खाते हैं बिल्कुल। चीजें enjoy करते हैं, but the only benefit that we have is we know our body, we know the biology about, around it, we know the psychology around it, so we are more aware. The Yes. whole idea is to be aware of what you are doing. ऐसा हम्म। नहीं कि भाई आप एकदम ये चीज कुछ छोड़ दोगे तो फिर एकदम से कुछ मैजिक हो जाएगा, दैट इज द आइडिया। पर गिल्ट हमें भी होता है, क्योंकि हमें और ज़्यादा गिल्ट होता है बिकॉज़ हमको बायोकेमिकली पता है कि अभी हमारा इंसुलिन बढ़ रहा है, हाँ, अभी हमारा लेप्टिन कम हो रहा है। सो बेसिकली द होल कांसेप्ट दैट बिकॉज़ वी नो मोर अबाउट इट, वी फील मोर गिल्टी। अगर ऐसा होता, मीन कमिंग बैक टू दैट ओनली जो तू बोल रहा है विल पावर वाली बात, हमारा विल पावर किसी का नहीं हो सकता यार। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू स्टे ऑन सम पर्टिकुलर डाइट फॉर देयर लाइफ? वो विल पावर की एग्ज़ैक्टली। कमजोरी नहीं है, इट इज योर बायोलॉजी, और आपकी बॉडी डिमांड करती है यार, आपकी क्रेविंग होती है, दैट इज इट ओके। इज़ एक्चुअली एवोल्यूशन। So, nerd mode on, what actually happens is when you are dieting, so your body thinks that you are in a state of starvation. And that is when it acts and it fights you. It tells you to eat more and it stores whatever it gets. So, इस तरह से जब भी आप डाइट कर रहे हो and then there are these concepts of cheat meal, and when you do the cheat meal you tend to gain more weight than on a regular basis where your metabolism is high. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलर खाना खा रहे हो, रेगुलर चीज़ें कर रहे हो, your metabolism is obviously higher than when you are dieting and in a state of starvation. So it is always better to have a balanced diet with exercise when it comes to weight loss than just do a crash diet. नहीं एग्जैक्टली आप बायोलॉजी को शेम से आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो, है ना? आप किसी को बहुत ज़्यादा टारगेट करोगे, किसी को बहुत ज़्यादा आप उसको, आई मीन इफ यू आर इंड्यूसिंग गिल्ट एंड शेम इन समवन, एक सर्टेन टाइम के बाद वो बोलते हैं ना ढीठ बन जाता है, उनको कुछ Hmm. फर्क ही नहीं पड़ता है। तो दैट इज नॉट द राइट आइडिया, यू हैव टू सपोर्ट Exactly. देम, यू हैव टू बी फॉर देम, बी विद Yeah. देम, एंड ओनली देन यू कैन मोटिव, यू हैव टू मोटिवेट, यू डोंट हैव टू डीमोटिवेट अ सर्टेन पर्सन। अगर आपको ये चीज़ें करना है, अगर आपको किसी को हेल्प करना है, इफ यू वांट टू टैकल दिस डिजीज़ ऑफ ओबेसिटी, इट शुड नॉट बी टैकल्ड विद बोलते हैं ना शर्म के शेम से आप उसको नहीं टैकल कर सकते हो। So basically, ये सिर्फ एक protective mechanism है, and this is the thing which is going wrong in this is that your body is protecting you too well. हुँ, That is why you are gaining weight, right? Can we put it like that? या आई मीन दैट That is इज़ what परफेक्ट, it या, is. Yeah. या, So I think in these cases, bariatric surgery is working wonders because you are biologically changing your hormones, हुँ, and we obviously train the patients in how to bring down their cravings. हुँ, So obviously they tend to eat lesser, and then they obviously have the support of of metabolic hormones with this, and that is how they are losing weight. एग्ज़ैक्टली। सो यू आर ट्यूनिंग योर बॉडी इंटू अ मोर एफिशिएंट इंजन रादर देन व्हाट इट इज़, राइट? Exactly. अभी आज हम कोई भी कार भी लेते हैं फॉर दैट एग्जांपल, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे कभी भी नहीं रहती है। यू कैन ऑलवेज ट्वीक इट अप टू वर्क इट एट देयर फुल कैपेसिटी। हमारी बायोलॉजी भगवान ने दिया है, दैट इज़ ओके, Mhm. बट दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। यू कैन टेलर मेक योर ओन बॉडी और योर ओन बायोलॉजी, एंड इट डज़ नॉट हैव टू बी ऑलवेज विद सर्जरी, राइट? देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट, हीलिंग है, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, आप साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करते हो। सो सर्जरी इज नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ इट, बट सर्जरी ऑब्वियसली डज हेल्प अ लॉट बिकॉज आपकी आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा, इट इज़ लाइक फ्रीडम। अभी आपको खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है। अगर आपके पास क्रेविंग है तो यू विल क्रेव फॉर जंक फूड ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे हमने बात किया। Mhm.
बट अगर क्रेविंग वाला एस्पेक्ट आप निकालो ना, यू वुड ऑलवेज कॉन्शियसली प्रेफर टू ईट समथिंग हेल्दी रादर देन सम जंक. Yeah. And also, there are a lot of patients who come to me and tell me that food was always their go to cover, Yeah. right? Like that was their way to, क्या बोलते हैं उसको, जो the Coping mechanism coping बोल सकते हैं ना. mechanism. Yeah, food was always their coping mechanism. Hmm. And now they don't have that. So they need to get into different ways of going through life. And this is something which is very difficult Yeah. because, as you said, bariatric surgery is not the only thing. There are so many challenges associated with it, Hmm. right? With surgery, we can only change the biology, Hmm. change the hormones, give them a push, help their body to get into a cycle which will help them be consistent in all their lives Yeah. during their whole life. एग्जैक्टली. तो यहीं पे हीलिंग वाला जो पार्ट तो बोल रहा है ना, दैट हेल्प्स. बिकॉज एक बार आपने सर्जरी कर लिया या आप किसी प्रोसीजर के इसके चले गए, आपको एक कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए रहता है, बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज अ डिफरेंट बायोलॉजी विच अभी आपको इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप अभी जन्मे हो. तो इट इज अ होल प्रोसेस. समवन नीड्स टू होल्ड योर हैंड. आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया रहता है, वैसे अभी यू नीड समवन सपोर्ट टू हेल्प यू थ्रू दिस चेंज विच इज गोइंग ऑन. फॉर these many years you had this idea ki this is the kind of food that I want to eat, this is what is. You were basically slaves to your junks and your cravings basically. Now you are liberated from it. Yeah. अभी एक बार आप इससे लिबरेट हो चुके हैं, तो क्या करना, क्या अच्छी चीज है, क्या अच्छी हैबिट है, दैट इज वेयर योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग एंड बीइंग देयर फॉर समवन एंड सपोर्ट कम्स इन. Yeah. So looking at the whole gist of it, हम एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि सर्जरी के मदद से we can bring down the cravings, Yeah. we can bring down the amount of food people are eating, and we can do a complete hormonal reprogramming, Yeah. because of which obviously the weight is going to go down. That is just one good aspect of it. Yeah. But other than that, we are going to target the whole metabolic syndrome spectrum in this, Yeah. right? So it is also going to help patients with diabetes, with hypertension, with dyslipidemia. Dyslipidemia is when you have high cholesterol, right? And with other obesity related issues like lung issues, like obstructive sleep apnea, cardiac issues because of dyslipidemia. So all of these things are taken care of. So the whole spectrum of metabolic disease needs to be taken under consideration. Because जब लोग मोटापे की बात करते हैं ना, people think that somebody is just obese. Yeah. Nobody is looking at these things in combination with obesity. Right. And apart from all these things, well, metabolism and everything, now coming to the other aspect of this, see, social bias, shame, self confidence, all these things also take a toll when you are a certain weight and you look a certain way, right? ठीक है, I mean, everyone should love our body, और ये सब आजकल चल रहा है definitely कि own your body, be happy with your body and everything. But it is not very easy. आप if you are going to a particular party, अगर आप कहीं जा रहे हो, बहुत सारे पेशेंट एकदम क्लियर आके बोल देते हैं कि सर हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं ना, तो हमको टेंशन आती है कि अगर वहाँ पे वो प्लास्टिक वाली चेयर्स होती है ना, कभी चेयर टूट ना जाए. राइट. Exactly. दिस इज समथिंग विच और किसी को नहीं समझ में आता है, और इस वजह से वो लोग कहीं बाहर जाने का प्रेफर नहीं करते हैं, कहीं पार्टीज में जाने में वो रहते हैं. आप फ्लाइट पे जाते हो, आपको एक्सटेंशन सीट बेल्ट चाहिए रहती है, तो अगेन सिंगल सीट बुक नहीं कर सकते, इकोनॉमी सीट्स बहुत अनकंफर्टेबल होती है, वॉशरूम्स जाना बहुत डिफिकल्ट होता है. एग्जैक्टली. ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं और करता. कोई सोचता भी नहीं है. अगर हम लोग को क्या लगता है, हाँ दिस इज जस्ट लैक ऑफ विल पावर. सो इवेंचुअली this is not willpower only. There are other aspects associated with it, and to shame someone, just label them कि नहीं ठीक है, इसका विल पावर कम है, या ये वो नहीं है, या इतना लेजी है, आलसी है. दैट इज नॉट राइट. That is not right. And जो आपने सही बात बताई कि your body is like an engine, and obviously with age वो इंजन की एफिशिएंसी अभी 100% पे तो नहीं है. Agreed. एंड उसमें हम और भी चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, फिर देन देयर इज स्ट्रेस. Obviously everybody has a lot of work stress, family stress in their life. Yeah. So all these things combined obviously bring down the efficiency of the engine. एग्जैक्टली. विद टाइम देखो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही है. अग्रीड. राइट. स्पेशली इन दिस डे एंड एज. अब 35-40 के आसपास वी आर ऑल हसलिंग. हमारा वो पर्पस ही ये रहता है कि चलो अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे. इन दैट एज ग्रुप वी टेंड टू इग्नोर आवर हेल्थ, है ना. आज कितनी बार होता है कि अगर हम लोग अवेयर हैं तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, बट जिसको आज दिन भर हासिल करना है, जिसको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने की वो रहती है, कब खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कोई वो फोकस नहीं रहता है. और ये सब चीजें जब हम कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी बाय By एज the यू आर. day going down. एग्जैक्टली.
and this is not also helping. Plus, आज adulteration in everything is so much. How many people know where their milk is sourced from? How many people know? अभी पनीर के बारे में इतना सब कुछ हुआ. For that matter, supplements के बारे में, supplements में इतनी सारी चीजें. Yeah, which is the right supplement to take? How would they know? Because nobody is there to teach them. Exactly. How many of them know which is the right time to take the supplement? तब कौन से part of the day पे कौन सा supplement लेना चाहिए आपको? Nobody knows ये this. भी नहीं पता रहता है ना कि supplements खाने के साथ लेना है, खाली पेट लेना है, इसके साथ नहीं लेना है, वो नहीं लेना है. So again, the awareness part, the intention, again, people who are helping them out या कोई जो वो help भी कर रहा है, probably the intention is not bad, but एक प्रॉपर नॉलेज भी तो होना चाहिए. आप ऐसे ही आप जाते हो कहीं स्टोर में, वो बोलते हैं कि आप फॉर दैट मैटर जिम जाते हो, जिम वाला बोलता है कि आपका ट्रेनर बोलता है कि सर ये सप्लीमेंट ले लो, ये ले लो. उसको भी कितना पता है? उसका इंटेंशन तो खराब नहीं है, वो तो चाह रहा है कि आप हेल्दी हो, आप उससे बेनिफिट करो. बट फॉर दैट अगर उसको खुद को इतना अच्छा नहीं पता होगा, तो हाउ विल ही बी एबल टू हेल्प यू आउट? Exactly. So coming back to the topic, that if self-confidence and all these things do Willpower. matter, and willpower, does it matter? Then what? I don't think it does, because there are many aspects which are taking care of your obesity, and obviously your body is taking care of it very well. So that is why you're obese, and we can't blame just willpower on this. नहीं, to वो बोलते हैं ना, to just to blame willpower is to make someone scapegoat out of Yeah. the whole scenario, right? There are so many aspects. It is easier to blame someone's willpower because उसके बाद में फिर आप बाकी चीज़ों को blame नहीं कर सकते हो, आप बाकी किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो. सबसे easiest target is willpower. कि तू आलसी है, तू उठ नहीं रहा है, तू डाइट प्रॉपर्ली नहीं करता, इसलिए you are obese. It is not that. और this brings us into a very different mindset as a society as such. आप लोग सामने वाले को इतना बोलते हैं ना, इतना उसका डीमोटिवेट कर देते हो कि देन टू ब्रिंग देमसेल्व्स अप दे नीड टू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ विल पावर which you cannot expect with Which you someone cannot else. expect. So that is when surgery comes into picture. It's like a servicing which we can do with your body, which will bring it back to its 100% efficiency. Yes, I mean, it obviously does help, yeah. I mean, we've seen results, we have so much of data, इतने सालों का data है, इतने सालों का research है, it is so scientifically backed. तो surgery obviously, I mean, जो आज के टाइम में अगर हम बोल सकते हैं कि the maximum benefit that someone can get is from surgery, yes. Is from surgery, But only exactly. surgery is not the only aspect of it. Post-operative, There have to be many things which needs to be done after surgery. Healing, and surgery is just a tool. Yeah. It is not the only outcome. So in the next episode of Cut, Heal, Repeat, we are going to talk about the myths which are out in the market, and we are going to bust them. These myths have been put there obviously by social media influencers. So we want to cater to this aspect and let you know what is right and what is wrong.